Welcome to Flawless Learning. So today our topic is data visualization. Let's make data speak. So basically what we have learned in the previous two videos like measure of central tendency and measure of dispersions. Today we will implement that code in Python and also some visualization plot like how can you visualize the data. Okay, so let's get started. So why do we need data visualization? Basically, data visualization is the process of graphically representing data to make patterns and insight clear. So क्या होता है ना, जब हम लोग एक डेटा को देखते हैं, तुम लोगों का अगले वीडियो में तुम लोग देखे होंगे कि डेटा टाइप्स कितना होता है, कैटेगोरिकल होता है, न्यूमेरिकल होता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ मेजर्स, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, देन मेजर ऑफ डिस्पर्शन भी पढ़ चुके हैं कि मीन, मीडियन, मोड, दिस काइंड ऑफ थिंग। लेकिन अगर बहुत ज्यादा like there's a huge data, so how can you handle that data, how can you visualize, like how can you manage that, what is the frequency of a bar, this kind of thing. Okay, suppose there are four classes, in the color, okay, so there is 100,000 shirts, and what's the how many shirts are in red color, how many shirts are in blue color, how many shirts are in gray color, this kind of thing. So how can you visualize? So visualization always needed, because so what is the purpose of it? So it simplifies complex data, it highlights trends and patterns. Okay, so what are the patterns inside the data, this kind of thing, and enhances decision making. Okay, now like example, that a table of numbers versus a bar chart of sales, which is easier to understand. Okay, क्या होता है ना, तुम्हारे पास अगर बहुत ज्यादा नंबर है, ओके, टेबल ऑफ नंबर मतलब क्या होता है, सपोज देयर इज, जैसे अभी मैंने बोला कि चार शार्ट, कलर ऑफ शर्ट इज फोर टाइप्स ऑफ कलर ऑफ शर्ट्स, ठीक है, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड व्हाइट. नाउ देयर इज 1,000 नंबर ऑफ शर्ट, एंड देन देयर इज क्या क्या है ना, उसमें लिखा है कि ब्लू शर्ट्स आर 500, दिस काइंड ऑफ नंबर, एंड देयर इज अ चार्ट लाइक एज अ ग्राफ, कि एक मतलब तुमको तुम्हारा वो है जो ब्लू है, ब्लू कलर का साइड में लिखा है कि कितना नंबर है, और ब्लू कलर का शार्ट का रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लू कलर से बार से. ओके, देन ग्रे कलर का बार, देन पिंक कलर, देन रेड कलर, दिस काइंड ऑफ. सो जस्ट सोचो कि कौन सा अच्छा तुमको अंडरस्टैंड करेगा, विच इज easier to understand, right? So always visualization, right? Now best practices for data visualization. So हम लोगों को क्या करना होता है ना, कुछ गोल्डन रूल्स फॉलो करना होता है डेटा विजुअलाइजेशन के. ओके, सो वी हैव टू फॉलो दिस गोल्डन रूल्स. व्हाट इज द रूल्स? सो बेसिकली चूज द राइट चार्ट फॉर द डेटा. So you have to very clear about the what is the data type, is that numerical data, is that categorical data. Okay, and then choose the right chart. Okay, now keep it simple, avoid unnecessary decoration. So तुम जितना सिंपल रखोगे उतना, मतलब एक होता है ना कि तुमको सोबर रखना है, सिंपल रखना है, ताकि हम लोगों को जो मतलब हम लोग जो कहना चाह रहे हैं थ्रू द डेटा, वो हम लोगों के पास ऐसा होता है बहुत सारा जगह रखती है. नो, दैट्स नॉट नेसेसरी. Always avoid unnecessary decoration. Okay, now label axis clearly कि x axis है, y axis है, and कौन से axis क्या define कर रहा है, ये बहुत mandatory है कि x axis क्या है and y axis क्या है, this kind of thing. Okay, so label axes clearly, then use color effectively, avoid misleading contrast. like क्या होता है ना, तुम अगर एक बार को डिप ब्लू कर दिए और एक बार को स्काई कर दिए, लाइक थोड़ा सा मतलब ब्लू के ही कोई और शेड तुम डाल दी, तो ये तुमको मिसलीडिंग करेगा ना, क्योंकि तुम्हारा मतलब थोड़ा बहुत ऐसे डिफिकल्ट होगा तुमको समझने में कि कौन सा कलर क्या. सो यूज कलर इफेक्टिवली, राइट? नाउ मेंटेन कंसिस्टेंसी इन फॉन्ट्स एंड स्टाइल्स. सो ऐसे फॉन्ट मत रखना और ऐसे स्टाइल मत कर देना ताकि हम लोगों को ऐसे विजुअलाइज ना हो, देखने में थोड़ा बहुत ऐसे दिक्कत हो रही है, क्योंकि विजुअलाइजेशन इज ऑल अबाउट टू लाइक visualize the data properly. Okay, so these are the golden rules. Now coming to plots, so common chart types and when to use them. Basically हम लोगों को क्या होता है कि चार्ट टाइप हम लोग देख लेते हैं और हम लोग क्या करते हैं ना कि हर एक डेटा पे हर एक चार्ट यूज कर देते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए. हर एक चार्ट का पर्पस अलग है. सो when to use them, so that's a थोड़ा सा मैंने एक कर दिए एक जगह पे, ताकि तुम लोगों को मतलब थोड़ा बहुत ऐसे देख लो एक बार कि बार चार्ट कब यूज होता है.
So bar chart is used for comparing categories like sales by region. So there are different regions and we have to compare the sales by region. So we have to use that bar chart. So basically it's compare the category. Like अभी हमने एक एग्जांपल मैंने दिया कुछ देर पहले कि अगर चार चार्ट्स है ब्लू रेड ग्रे एंड व्हाइट दिस कलर का, and so how can you represent that category? So we have to use a bar chart. Okay, now when to use pie chart, there's a it's showing proportion. Okay, like market share. और बेसिकली क्या होता है ना, सपोज तुम्हारा जो एक्सपेंसेस है, तुम एक मायने इनकम जो है, तो तुम एक्सपेंडिचर की कितना प्रोपोर्शन तुम फूड में इन्वेस्ट कर रहे हो या खर्चा कर रहे हो, फिर कितना प्रोपोर्शन तुम फूड्स के बाद हो गया तुम्हारा ड्रेसेस पे खर्चा कर रहे हो, दैट काइंड ऑफ प्रोपोर्शन. सो शोइंग प्रोपोर्शन लाइक मार्केट शेयर. ओके, देन आते हैं हिस्टोग्राम. सो इट्स अंडरस्टैंडिंग डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, दैट कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेंगे. इसके बाद मैं अभी तो फिलहाल मैं ये डेटा टाइप्स एंड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी लाइक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक के बारे में बात किए हैं. तो अभी इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन. तब आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और ज्यादा अच्छे से पता चल जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है एंड क्यों जरूरत है डिस्ट्रीब्यूशन का, कितना तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दिस काइंड ऑफ थिंग. ओके, सो अंडरस्टैंडिंग डेटा डिस्ट्रीब्यूशन लाइक एज ग्रुप्स, कौन से डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, ये हम लोग को कैसे पता चलेगा, वो हिस्टोग्राम से थ्रू हम लोग को पता चलता है. ओके, देन आते हैं बॉक्स प्लॉट. सो बॉक्स प्लॉट इज आइडेंटिफाइंग outliers and spread. So basically if there's a lot of data, so basically क्या होता है ना, there's some data whose behavior unusual. Okay, so basically क्या होता है, तो हम लोग वो उसको हम लोग outlier या noise कहते हैं. Okay, so how can we identify? So using box plot we can easily identify the outliers. And what's the spread? Basically in the box plot there's a quantiles base. Okay, there's mentioned first quartile, then second quartile, then third, fourth, this kind of. So it's basically spread of the data. Okay, and now coming to last like scatter plot. So it's showing relationship between variables. Basically क्या होता है ना, अगर तुम्हारे पास दो वेरिएबल है, नंबर x is a variable which denotes that how many hours you read, okay, you study, how many hours you study, and y variable that what's your marks. Okay, that how many numbers you scored in your exam, this kind of thing. So I have to take that. Okay, अगर कोई बंदा 8 घंटा पढ़ रही है तो उसका रिजल्ट अच्छा होगा, या कोई बंदा 4 घंटा पढ़ रहा है उसका रिजल्ट अच्छा होगा. तो इसका हम लोग रिलेशनशिप, अभी ये तो मैंडेटरी नहीं है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि ओके बहुत अच्छा पढ़े हैं, मतलब ऐसा नहीं होता कि बहुत अच्छा रिजल्ट, ऐसा वाला भी नहीं होता. लेकिन हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू वेरिएबल, कि जो बंदा बहुत ज्यादा पढ़ते हैं उसका ही रिजल्ट अच्छा होता है, या जो बंदा कम पढ़ते हैं उसका भी हो सकता है. सो व्हाट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल, दिस काइंड ऑफ थिंग. ओके, so that's we need that scatter plot. Okay, so that's a common chart types and when to use them, best to use for which chart, this kind of thing. Now let's go to the visualization. Like let's go to the, so here I have used Google Colab. Okay, so you can use Jupyter Notebook also, and you can use anything like there's different kind of notes, and there are different kind of VS Code, you can use also that. But I have used that Google Colab, and you can use according your choice. Okay, कोर्स मैंडेटरी है, नॉट दैट किसके थ्रू तुम कर रही हो. तो ओके, सो फर्स्ट इज डेटा विजुअलाइजेशन, एंड इसके बाद हम पाइथन स्टार्ट करेंगे. तब और अलग सा कोई हो सके मैं और अलग कोई एक यूज करूँ. ओके, सो दिस काइंड ऑफ थिंग मैं धीरे धीरे तुम लोगों को मतलब सबके साथ ही हैबिचुएट करा दूंगी. कभी मैं गूगल कोलैब यूज करूंगी, कभी मैं डीप नोट यूज करूंगी, दिस काइंड ऑफ थिंग, ताकि तुमको सब पता चल जाए कि कैसे कैसे तुम कर सकते हो. ओके, देन यू यूज दैट, तुम्हारा जो अच्छा लगे, जो मर्जी वो तुम कर सकते हो. Okay, so basically see, in the measure of central tendency and in the measure of dispersion, so there's we have like learned so many things. There's measure of central tendency. What are the measures of central tendency? Yes, mean, median, mode, right? And what's the measure of dispersion? There is range, there is variance, there is standard deviation, this kind of thing. Okay, so ये हम पढ़ चुके हैं कि उसका थ्योरी क्या होता है, व्हाट्स द थ्योरी बिहाइंड दैट मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी एंड डिस्पर्शंस, व्हाट्स द पर्पस ऑफ देम. नाउ इट्स टाइम टू इम्प्लीमेंट दैट इन कोड. ओके, इन पाइथन. सो बेसिकली क्या होता है ना, हम लोग कैसे सैम्पल डेटा सेट क्रिएट करते हैं, ये तुम देखो.
पाइथन में इन डिटेल्स हम बताएंगे कि ये लिस्ट क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं, फिर कैसे डेटा टाइप देखते हैं, सब कुछ मैं पाइथन में डिटेल्स, फिर नमपाई इधर देख रहे हो पांडास, देन नमपाई, दिस काइंड ऑफ थिंग्स, लाइब्रेरीज। सो ये हम पाइथन के सेगमेंट में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन अभी के लिए तुम लोगों को सिर्फ फोकस करना है दिस विजुअलाइजेशन का टूल पे, ठीक है, कैसे हम विजुअलाइज करते हैं, कैसे हम डेटा से लेते हैं, this kind of thing, okay, because this is the segment of statistic, not the coding part, okay. So that's what I need, that different segment, okay. I have already completed the SQL, now I'm running that statistic, there's a descriptive statistic now I'm teaching, okay. And there's a अलग से segment होगा python का ऊपर, where I will this pandas, this numpy, then list, the data type, this kind of thing I will explain very very clearly, okay. So let's see. So creating the a sample data set in Python, how can you create a sample data set? So basically ये pandas क्या होता है, pandas अभी सोच लो, अगर तुम जानते हो तो that's great, अगर नहीं भी जानते हो तो just एक दो लाइन में बोल देती हूँ। ये एक लाइब्रेरी होता है, ठीक है, pandas then numpy, this is a library and so इसको हम लोगों को import करना होता है। import मतलब क्यों import करना होता है, because हम लोग इसको एक डेटा फ्रेम बनाएगा, ठीक है। अगर मैं ये रन करूँ, इधर रन करके मैं रखी है कि स्टूडेंट्स मैथ साइंस इंग्लिश दिस काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। सो बेसिकली क्या होता है ना, इसको हम लोग डेटा फ्रेम में, अभी ये देखो हम लोग कैसे दिए हैं कि स्टूडेंट का नाम क्या है, ABCDE, ये स्टूडेंट्स का नेम है, ये इधर तुम नेम भी, तुम्हारा फ्रेंड्स का नेम भी लिख सकती हो। सो ABCDE आर द स्टूडेंट्स नेम एंड दैट्स द स्कोर्स दे ऑब्टेन्ड इन देयर एग्जाम, okay, so that's the score in math exam, that's their score in science exam and that's their score in इंग्लिश एग्जाम, ओके। सो इसको हम डेटा फ्रेम में कैसे कर सकते हैं, जस्ट डॉट डेटा फ्रेम, सो इस पीडी इज पंडास, सो पंडास हम लोग जो निक नेम देते हैं ना, तो पंडास को हम लोग पीडी में ऐसे लिखे हैं, ठीक है। सो इम्पोर्ट पंडास एज पीडी, नाउ पीडी डॉट पीडी में ये जो लाइब्रेरी है इसके अंदर हम लोगों को ये डेटा फ्रेम है, जैसे डिक्शनरी होता है ना, कि एक डिक्शनरी के अंदर कुछ चीजें रहती है जिसके मीनिंग हम लोगों को पता चल जाता है कि इसके अंदर ये है, तो दैट काइंड ऑफ लाइब्रेरी हियर, that pandas is a library where data frame, this data frame is in the, so we have to import data frame or you have to call the function data frame from that library pandas, okay. I hope that's clear. See, here's also written that pandas is a Python package providing first flexible and expressive data structure designed to make working with relational and label data both easy and intuitive, okay. ओके, सो बेसिकली हमने ये डेटा ले ली, तो देखो अभी प्रिंट करने के बाद ये आया, ठीक है। सो बेसिकली क्या हो गया, पाइथन में एक हम लोग सैम्पल डेटा सेट क्रिएट कर रहे हैं, वी हैव क्रिएटेड अ सैम्पल डेटा सेट इन पाइथन। नाउ calculating central tendency and dispersion in Python. So what we have learned in central tendency, there's a mean, there's a median, there is a mode. So see, how can you calculate in the mean? So now mean कहाँ है, mean है numpy के अंदर, numpy is also a library, so importing necessary libraries, so import numpy as np. now np के अंदर mean है, np के अंदर median है, okay. So basically इसको थोड़ा सा याद रखना होता है कि किसके अंदर कौन सी लाइब्रेरी के अंदर क्या क्या है, ओके। सो बेसिकली सी पांडास का अंदर था डेटा फ्रेम एंड नाउ नंपाइस का अंदर है मीन एंड मीडियन, ओके। सो ये कैलकुलेटिंग मीन, सो बेसिकली व्हाट्स द एवरेज स्कोर ऑफ द स्टूडेंट, दैट्स द क्वेश्चन। अगर तुमको कोई पूछे कि क्लास में एवरेज मार्क्स कितना आए, तो तुमको क्या करना होगा, एवरेज, हाउ कैन यू कैलकुलेट का एवरेज, इफ यू ऑलरेडी watched that video which I have measure of central tendency, so there I have mentioned that you have to sum all the scores and divide it by the total number of counts, like here you have to, how can you manually calculate that average, that 85 plus 90 plus 78 plus 92 plus 88, like sum up all these five numbers and divide it by 5, because there's a count is, there's a number of students is 5, okay. So that's how you calculate manually. But if there's a lot of students, like thousand of students, so how can you calculate them easily? So that's the code that you have to just write it np.mean. Now df, what is df? So df is the that data frame we have mentioned here, that df we assign the name as df. ये मैं पाइथन में पढ़ाऊंगी, ठीक है, अभी के लिए मैं एक दो लाइन करके बोल दे रही हूँ, ओके।
सो एनपी डॉट मेन देन नाउ डीएफ. सो डीएफ के अंदर देखो तीन चीजें हैं, मैथ है, साइंस एंड इंग्लिश है. सो फॉर मैथ के लिए हम लोग लिखेंगे मैथ, फॉर साइंस के लिए वी हैव टू राइट साइंस, एंड फॉर इंग्लिश वी हैव टू राइट इंग्लिश. ओके, so that's how you calculate the mean, np dot mean. So that's the main here comment, that np dot mean. Okay, and what is np is numpy. Okay, now how can you calculating median? So median क्या होता है, the middle value, right? So now the df, so math, so that's the median of math. Now how can you calculate the mode? So for mode we have to scipy. So from Skype there import stats. There's a library called stats where mode है, ठीक है? So stats dot mode. Now keep dins equals to 2. So that's how you calculate that mode. Okay, now how can we calculate standard deviation? वो भी np के अंदर है. So np, that is numpy dot std, which is standard deviation. So that's the code of the calculating standard deviation. And मैं तुमको एक बात और बताती हूँ कि ऐसा नहीं कि मैं जो दिखा रही हूँ ऐसे ही सब कैलकुलेट करना चाहते. there's a lot of way calculating the mean, median, mode, standard deviations. Just like I have give you an example that how can you standard deviation, you can use this also. Okay, because there's a lot of programming languages, like there's R also, where you can just simply mean of the term. Okay, this that's the code in the R. So there's a different kind of programming language, and अभी के लिए मैं पाइथन में बात कर रही हूँ क्योंकि पाइथन इज मोस्ट यूज्ड इन different data science role. Okay, so that's why I'm trying to habituate you with Python. Okay, now how can you print that? Like here is, see, mean math score. So how can you print that mean math score? You have to write print, then mean math score, then mean math. Okay, this how can you. So basically क्या करना होगा तुमको, if you want to practice, you want to, तुमको practice करना चाहिए. So okay, so you have to practice. So क्या करना होगा, तुम just गूगल कोलैब, गूगल पे सर्च करोगे गूगल कोलैब, एंड देयर साइन इन, मतलब उधर साइन इन का ऑप्शन आएगा. जैसे मेरा इधर मैं साइन इन करके रखी हूँ गूगल अकाउंट पे. सो तुम जस्ट सर्च करोगे इधर, एंड सिंपली यू कैन लाइक गूगल कोलैब, यू कैन राइट इट हियर दैट दिस गूगल कोलैब, एंड देन here you just sign in the Google Colab. Okay, which I have already signed in. So just simply sign in and then use this command. ओके, सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट और वीडियोस को पॉज करो और ये लिखो और लिख के रन कराओ. देखो अलग ही मजा आएगा कि यस आई कैन डू इट. एंड व्हाट यू हैव डन दैट, सी सपोज यू जस्ट टेक इट स्टूडेंट्स एज योर फ्रेंड्स नेम. ओके, एंड देन मैथ, देन साइंस, एंड तुम्हारा जो 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 सब्जेक्ट तुम लोगों का है, और जस्ट राइट इट आउट. ओके, राइट इट डाउन एंड देन जस्ट स्कोर को लिखो. सो देखो मजा आ जाएगा. ओके, now coming to plots. So basically first is bar chart, which is comparing categories. So how can you see, this is a bar chart. So bar chart मैंने यहाँ पर क्या किया ना, मैथ स्कोर के लिए स्टूडेंट के बार चार्ट बनाए. लाइक what is the math score and the student name. See, here's the student name, so that's the plt. So it's also matplotlib, the pyplot. This is also a library. Okay, so now here bar, and this is student and df math. now x level, तुमको x level देना है students. देखो इधर x level में students है, and y level में क्या है, math score. So that's, you have to write it ना, that plot dot y level is math score and plot dot title is math score of student. Okay, so that's the code of bar chart. That's how now your exercises just try to bar chart for science score and bar chart for English score. Okay, try to find it out now. So that's math score. Let's see, a का number है 80 के ऊपर and this kind of thing. Okay, so that's how your visualization work. Now let's go to the pie chart. So pie chart, so this is the code of pie chart. Basically you have to give the subject, you have to give the averages. Here what I am trying to do, that डिफरेंट सब्जेक्ट में एवरेज स्कोर कितना है, मैथ में कितना, साइंस में कितना, एंड ऑल्सो इंग्लिश में कितने नंबर आए. ओके, सो बेसिकली आई हैव टेकन द सब्जेक्ट्स मैथ, साइंस एंड इंग्लिश एंड एवरेजेस. सो हाउ कैन यू टेक द एवरेज? we have already shown that np dot mean of the math, then math science, then mean English. Okay, now plot dot pi. So this is the common for pie chart, plot dot pi. So averages, then levels is subject, and this. Okay, now we have to select the color. See, red, blue and green, which I have that मैंने बोला कि golden rules क्या होते हैं कि कोई ऐसा अगल बगल का कलर यूज मत करो. जैसे मैं अभी ब्लू यूज की है तो मैं aqua या स्काई कुछ भी नहीं यूज किए, ताकि तुम लोगों को एक बार से देखने में समझ में आ जाए कि कौन सा
कलर कौन सा सब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओके, सो हियर सी आई हैव राइट हियर रेड. सो रेड इज फॉर मैथ. सी, सो दिस इज द ऑर्डरिंग, लाइक फर्स्ट वाला कलर जो है वो मैथ के लिए लेगा. ओके, सो रेड इज फॉर मैथ. Now blue color is for science and green color is for English. So that's you have to define the colors. Okay, just maintain the order. If you want to blue for math color, so you have to write it blue instead of red. Okay, now plot the title is average scores in different subject. So that's the title of our plot. So that's how you can create a pie chart. Now let's go to the histogram. So histogram is nothing but like distribution checking करने के लिए. So what's the distribution of math score? So that's the title. See, plot dot title, pld dot title. Now pld dot y level is frequency and next level is score. Say math score and frequency. Okay, and then plot dot his is the common for histogram. Now and beans is 5, so that means you have to take that 5 number. Okay, so beans, then color is purple and age color is black. Black is ये जो border देख रहे हो ना, ये हमने black किए है, that is age color. Okay, now coming to the next is box plot. Okay, so now box plot for math score. So plt dot box plot, extremely sorry background noise के लिए. So plt dot box plot. So this the math score. Math के लिए हम box plot कर रहे हैं. Then title is box plot for math. Okay, and then y level is scores. Okay, so that's how you create a box plot. Then scatter plot. So what's the purpose of scatter plot? Basically it's a relationship between two variables. Like, so we can scatter plot that math versus science scores. So pld dot scatter is the command for scatter plot. Now this is like math और science के बीच में हम relationship देख रहे हैं. और what color we have used, that is orange. Okay, now pld dot x level is math score and pld dot y level is science score. So so that's the scatter plot. Okay, that's how can you used that common chart types and used for. Okay, so mistake to avoid in data visualization. सो कॉमन पिटफॉल्स, लाइक क्या होता है ना, कभी कभी कुछ मिस्टेक्स हो जाता है जो डेटा विजुअलाइजेशन में नहीं करना चाहिए. सो यूजिंग द रॉन्ग चार्ट फॉर द रॉन्ग डेटा, इट्स अ वेरी वेरी मिस्टेक्स दैट यू हैव टू अवॉइड, राइट. सो बेसिकली क्या होता है ना, अभी तुम लोग देख चुके हो कि कौन सी डेटा के लिए क्या यूज करते हो. ओके, सो दे आर अ डिफरेंट काइंड ऑफ, लाइक you have to showing proportion, then you have to go for that pie chart. You have to compare the categories, you have to go for that bar chart. Okay, now you have to show that the relationship between two variables, you have to go for the scatter plot, this kind of thing. So basically don't use wrong chart for the data because it mislead you. It can't conclude what you want. Okay, now cluttering charts with too much detail. ओके, सो तुमने देखा होगा कि मैंने बहुत सिंपल रखा है. यू हैव टू वेरी लाइक क्लियर कट आइडिया, क्लियर कट लेबल, क्लियर कट टाइटल. ओके, सो डोंट क्लटरिंग चार्ट्स विथ टू मच डिटेल. नाउ मिसलीडिंग स्केल्स दैट डिस्टॉर्ट डेटा. यू हैव टू स्केल्स प्रॉपरली. ओके, सो बेसिकली क्या हुआ ना, तुमने अभी जस्ट थोड़ा सा ही चार्ट देखे हो. इट्स वेरी वेरी बेसिक चार्ट्स विच यू हैव I have showed that this kind of, but if you want to like know more details in visualization, there are different kind of charts like heat map. Okay, when I will go that machine learning segment, I will show you the how can heat map done. Okay, so so that times you have to misleading scales that distort data and using too many colors. Okay, just keep it simple. So that's how the data speak. Okay, so thank you. And if you have any kind of confusion in data visualization, let me know in the comment section. Let's be flawless together. Thank you.